logic, rhythm, color and spatial awareness in a single, uniquely powerful manner. In so doing, it gives you the freedom to capture the infinite power and creativity of your brain. And last part, just now we were discussing in the second stage of this discussion, that is, it is not something new. It is, you will see in ancient days, in olden days, in every culture, visuals were used to communicate. Visuals, and see many languages operate through visuals. You'll see small symbols connected to describe something. The mind map can be applied to every aspect of life where improved learning and clearer thinking will enhance your productivity. I'll request you to close your eyes and try to create a mind map. Try to, through the clouds, make one cloud where there's a mind map, then say why, how, and everything. You make a mental mind map or mind map of anything. Maybe you can take yourself. So at center you say I, or you can put your photo there, and then origin you can have one, ambitions you can have one, then strength and weaknesses. Basically, mind map is one of the active learning process where your mind is left and right part of the mind is completely involved, and they work in a very integrated way. So mind map can be applied to every aspect of life where improved learning and clearer thinking. No, it is said when you are creating a mind map, you will see the word mind map. When you are creating a map in the mind, you are more involved and you try to see things very minutely, which you will not in traditional note taking method where you just become a reporter. You are not actively involved, your mind is not actively involved. So the mind map can be applied to every aspect of life where improved learning and clearer thinking will enhance productivity. It enhances productivity. Productivity in the sense it is recall is very high, degree of recall is very high, then application of the concepts, and then storage, it uses very less space, and it is like you remember very fast, and of course thinking is simulated. Maps by great thinkers, as I was telling, it is not something new. If you see in the knowledge, if you go through the history of knowledge, the way things have evolved, symbols were always used to communicate. We have always used symbols. हमने हमेशा symbols के इस्तेमाल की हैं हर जगह पे, in every culture, in every geographic locations. In fact, the whole communication, languages came later. First came was visual communication. So people used to use symbols for communication. They used to evolve symbols, or they used to evolve existing symbols. Many languages have come through that, but they found they were not able to use it efficiently. So finally we got language. Language came in, we evolved languages in a short form. Then we have today again mind map in a very efficient way, in a professional way, much organized, much researched, and that's what is the contribution of Tony Buzan. There is evidence to suggest that many great thinkers throughout history have used mind map type techniques. These include Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, Winston Churchill. I'll show you some sample. If you'll see, in all the Da Vinci notebook contains many symbols, many maps, and there are novels also. If you see the many novels like Vasco da Gama, he has a map, he was looking for things, he was moving around. So it's like used from since centuries. Why mind map? So let us get into detail. It encourages creativity. You know,
when you are thinking through, one of the problem is we are too much lost into note making, and nowadays we have xeroxes. When you are preparing mind map, you think through holistically. You try to capture every point in a very short span, in a very less space. So it encourages creativity. While creating mind map, what you're doing is you try to associate things which are generally not associated, because there has to be connectivity. You look for a way to connect, and when you are look for a way to connect, and a time will come when you get an aha experience. Wow, I never thought that this will happen. I never thought, like, say, when Newton was visualizing, creating a mind recall, or mind involving his mind, so his thought was is like apples. Apples are falling down since centuries, since the days of human being. So people may be taking apple and eating. Wow, it's a tasty apple. But Newton, he created a mind map. He started thinking on it. He started getting what, why, and how. So one question by him in a sequence, that you know apple is up. When it breaks down from the plant, it's up, it should go up. It's not going up. It's not going to right, it's not going to left. Why it is coming down? Why it is that one sequential thinking in the mind led to discovery of Newton's law. So mind maps are very good tools for encouraging creativity, for helping people explore what is not done, for helping people explore the gap. I always say periodic table is a form of mind map, where we have kept all the elements discovered so far in a sequence. And when you're putting in sequence, you're finding some gaps. So there is already gap for 8 to 10 elements which are yet to be discovered. If you have not put, imagine periodic table could not have been discovered. So most likely, number one, we will fail to remember things in a sequenced way, and we could not have sensed this gap in a systematic way, and further extrapolating, further visualizing कि ये और भी elements हो सकते हैं. So mind map encourages creative thinking. I'm sure you know what is visual thinking skills. Let me give you an example. You close your eyes, please close your eyes. अपनी आंखें बंद करिए. आपके सामने एक हाथी खड़ा है. An elephant is standing in front of you. हाथी का कलर चेंज हो रहा है. धीरे धीरे हाथी ग्रीन हो रहा है. The elephant is turning green. ग्रीन हो रहा है. यह हाथी जो अभी ब्लैक था पूरी तरह ग्रीन हो गया है. आप वो ग्रीन हाथी को देख पा रहे हैं. हाथी आपके सामने खड़ा है. उसके पंख निकल रहे हैं. विजुलाइज करिए. पूरी तरह एक पिक्चर अपने सामने लाइए आंखें बंद करके. विजुलाइज करिए हाथी के पंख. हाथी, हरा हाथी, ग्रीन एलिफेंट, एक हरा हाथी ग्रीन एलिफेंट अपने पंख फैला करके उड़ने की कोशिश कर रहा है. पूरी तरह विजुलाइज करिए. जब वो उड़ रहा है तो उसके ट्रंक, उसके चार पांव, उसकी पूंछ और उसके पंख की पोजीशन कैसे है, किस तरह से उड़ रहा है, कैसे पोस्चर में है, कैसे उड़ रहा है. उसके पांव ऐसे हिल रहे हैं या पंख ऐसे हिल रहे हैं और पांव
अंदर की तरफ मोड़ के रखा हुआ है, पूंछ ऐसी हिल रही है या नहीं, ट्रंक की क्या सिचुएशन है, हाउ द ट्रंक इज लुकिंग लाइक, ऐसे है या ऐसे मूव कर रहा है या ऐसे है, नीचे की तरफ है, पूरी तरह विजुलाइज करिए। हाथी, एक ग्रीन हाथी, ग्रीन एलिफेंट कैसे उड़ रहा है, हाउ इट इज फ्लाइंग, पूरी तरह विजुलाइज करिए। उड़ रहा है, आसमान में उड़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ट्राई टू ब्रिंग ए क्लियर पिक्चर, पूरी तरह विजुलाइज करिए। ट्राई टू ब्रिंग ए क्लियर पिक्चर। हाथी, हरे कलर का हाथी, ग्रीन कलर हाथी उड़ रहा है। उड़ता उड़ता वो हाथी अपना कलर चेंज करने लगा, ग्रीन से वाइट हो रहा है, सफ़ेद हो रहा है, सफ़ेद हाथी में कन्वर्ट हो रहा है। पूरी तरह डिटेल में चाहिए। देखिए कैसे वाइट किस तरह से मूव कर रहा है, पूरा बदन उसका, पूरी बॉडी उसकी वाइट में कन्वर्ट हो रही है, वो उड़ रहा है। उसके पाँव का पोजीशन क्या है, उसके पूंछ की पोजीशन क्या है, उसके ट्रंक की क्या पोजीशन है, डिटेल में देखिए। इमेजिन करिए, आप हर टॉपिक को ले करके ऐसे इमेजिन करें, ऐसे विजुअलाइज करें। इट इज़ वेरी गुड मेमोरी टेक्निक एंड इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ द माइंड ऑल्सो। और जब आप विजुअलाइज करें, इमेजिन करिए आप शाम को सोते वक्त 15 मिनट विजुअलाइज करें, पूरी तरह विजुअलाइज। आप उठें, आपने ये किया, लाइक ए पिक्चर, लाइक ए फ्लैश बैक। And if you do it for 21 days, your memory will increase, it will be enhanced. Now, it also helps in conceptualizing learning in a meaningful way. You make better concepts and you try to give what happens when you're thinking in terms of, जब आप visuals के term में, जब आप pictures के term में सोचने लगते हैं, तो होता क्या है, अगर आप एक सिंपल सी टॉपिक लें, अभी नवरात्रि का मौसम है, इट्स नवरात्रि। सो अगर मैं नवरात्रि को लूँ, सो एक छोटा सा माइंड मैप क्रिएट करते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी। सो नवरात्रि में मैथ्स कहाँ है, साइंस, ह्यूमैनिटीज, civics, history, economics, music, food, health. Now try to see what is the meaning of context. It brings a context in the sense. Now देखिए, अगर आप नवरात्रि के बारे में 1 मिनट की सोच में कल्चर, 1 मिनट की सोच में हमने ये देखा, wow, there is a science in it, there is a maths in it, there is a food in it, there is a health in it. आप when you are dancing, गरबा जब आप करते हैं, इट्स a good exercise. 9 दिनों तक करते हैं, इट्स a good exercise, so it's good for health. So Navratri is related to economics, lots of sale of costumes and sound system and much more. It's like a cascading effect, one affects other. It's related to music, it's related to civics, in a systematic way, helping each other, encouraging each other, keeping in pace with each other. So teamwork, team spirit, maths.
There's a mass to it. Navratri, Navratri means it begins with a number. Nine nights. Navratri. हेल्थ मैंने बात कर ली. साइंस, फूड, हिस्ट्री, आपको पता ही है, इट इज हिस्ट्री, कल्चर and economic. So what happens is that you're bringing, when you're making a mind map of Navratri, you are bringing a context, you're bringing different subjects, you're trying to bring in different areas. आप हर तरह से उसको कनेक्ट कर देते हैं. That is called 360-degree learning. So वे mostly what happens जब आप माइंड मैप बनाते हैं, so it's as good as 360-degree learning. वो सब्जेक्ट को आप हर एंगल से देखते हैं. 360-degree learning. हर एंगल से. You see that subject from every angle. Think of any subject. Any, you take water, you take cloud, you take आप एक संज्ञा या एक कवि जावेद चंद मेघानी ले लीजिए, उन पे माइंड मैप तैयार करिए. आप देखेंगे आपके माइंड मैप में उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें आ जाएगी. इनफैक्ट माइंड मैप इज़ वेरी एफिशिएंट वे एंड इट्स वेरी सिमुलेटिंग टू द माइंड. दिमाग को एक काफ़ी जागरूक रखता है और काफ़ी अलर्ट रखता है. माइंड मैप प्रमोट्स एक्टिव इन्वॉल्वमेंट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे मैंने बताया, अगर आपको केवल नोट लेना हो ना, मान लीजिए अगर मेरे ये जो हमारी लेक्चर हुई है, इसका अगर मैं बोलूँ आपको माइंड मैप बनाना है, तो आप एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाएंगे. और मैं अगर थोड़ा उसमें और भी बोलूँ, तो आपको अपने खुद के सिंबल इवॉल्व करने हैं या खुद का एक कुछ माइंड मैप बनाना है. मैं आपको 2 मिनट देता हूँ. अभी तक जो हमने डिस्कस किया है उसको ट्राई टू कैप्चर विद द हेल्प ऑफ विजुअल्स. एक विजुअल्स के माध्यम से कैप्चर करिए. अगर आपके पास पेपर पेन नहीं है तो आप बिना पेपर पेन के माइंड में ही अपनी माइंड मैप बनाइए. माइंड के अंदर माइंड मैप. एनी टॉपिक, टेक एनी टॉपिक, कोई भी टॉपिक लीजिए. कोई भी टॉपिक लीजिए.